Good afternoon, students. Your assistant teacher L. K. Tripathi here. Dear students, we have discussed about geography chapter 8, that is climate of India. Somehow we have seen up to the coastal areas and places near the sea, distance from the sea level, oceans, and with the new video we shall discuss about some important topics. First one of them is cycle of seasons. What is cycle of seasons? After elaborating this video we shall come to know much more. Let's get started. Temperature, pressure, condition, prevailing wind. The amount of distribution of rainfall cause the seasonal changes in India. What are they? Temperature, pressure condition, prevailing wind, all such size of amount and distribution of rainfall, they support for the seasonal changes in the country. Besides, there are some local winds that influence the climate of area in which these prevail. Not only that, also some local winds are there. They also support to influence the climate of the area in which this prevails. The seasons occur year after year as a pattern. साल दर साल सीजन आकर करता है, ये इसका पैटर्न है. द 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स आर, क्या क्या है 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स? नंबर 1, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, that is December to February. This is the cold season of the country. Hot weather season और summer, जिसे हम समर कहते हैं. इन समर वी फील हॉट, that is March to May. एडवांसिंग मानसून और रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून, that is June to September. Retreating मानसून मीन्स मानसून की जब विदाई होती है उससे रिट्रिएटिंग मानसून कहते हैं. अक्टूबर एंड नवंबर, द कोल्ड वेदर सीजन्स, दीज आर द सीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल go to study about the cold weather season. This season starts in mid-November and continues till the end of February. The days are warm while the nights are cold. The temperature is generally low and decreases from south to north. In this month, as compared to the nights, days are warmer, nights are cooler. The temperature, it generally low and decreases from south to north. साउथ से नॉर्थ तक ये डिक्रीज करता है, कम होता जाता है टेम्परेचर. The main temperature in the northern parts of India is less than 20 degree Celsius. जो मेन टेम्परेचर है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया का, ये 20 डिग्री लेस है. While in the southern part is more than 20 degree Celsius. सदर्न पार्ट में 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है. मीन्स when northern
hemisphere or northern part of the country experiences cold, south experiences warm. When south experiences warm, northern part experiences cold. This is just opposite. Next, that is the northeast trade wind blow over India. जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो बहती है भारत में, वो लैंड से सी तक बहती है। नॉर्थ वेस्ट विंड जब बहेगी तो लैंड टू सी बहेगी, मतलब इस इलाके से कॉरिडोर से नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से जो असम के रीजन से जो ब्लो होगी वो लैंड टू सी चलती है। दस द विंटर सीजन इज ड्राई। इसमें विंटर सीजन क्या होता है? ड्राई होता है। दीज विंड्स आर आल्सो कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स और द विंटर मानसून्स। इसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून या विंटर मानसून्स के नाम से भी जानते हैं। However, while passing over the Bay of Bengal, these winds pick up enough moisture and provide heavy rains in the coastal areas of Tamil Nadu. जब ये बे ऑफ बंगाल से पास होती है तो इस समय यहाँ पे ये विंड बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है और हेवी रेनफॉल आकर करता है कोस्टल एरियाज़ में, तमिलनाडु में। द कोल्ड वेदर सीजन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काइज। कोल्ड वेदर सीजन ये कैरेक्टराइज है क्लियर स्काई से। लो टेम्परेचर्स, लो ह्यूमिडिटी and light and cold winds. These conditions prevail mostly in North India, where the western disturbances affect the climate. Heavy snowfall in the Himalayan range and rainfall in the plains during the winter season is also due to the western disturbances. Their arrival is followed by severe cold weather conditions. जब ये आते हैं तो यहाँ पर विंटर में सीवियर कोल्ड होता है, वेदर हो जाता है। द हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन क्या है? दिस सीजन स्टार्ट्स इन अर्ली मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ मे। हॉट वेदर सीजन यहाँ से स्टार्ट होता है अर्ली मार्च में और मई में ख़त्म होता है। एंड इन सम एरियाज टिल द एंड ऑफ जून, और कुछ एरिया में जून में ख़त्म होता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग एज हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन प्रिवेल थ्रू आउट द country except the coastal plains. During the month of March, the highest temperature recorded in the peninsular plateau regions is about 38 degrees Celsius. The belt of high temperature shifts northwards in the month of April. During the month of May, the region of highest temperature of about 45 degrees Celsius lies in the northwestern part of our country. Such high temperatures are not recorded in South India, where the mean temperature is about 30 degrees Celsius. Even the minimum temperature does not fall below
20 degrees Celsius, due to which the nights are also warm. In the summer season, hot and dry winds called low blow over large parts of northern plains. Dust storms in evening are common. Some areas get light rain which provide temporary relief from the oppressive heat. Northwestern or thunderstorms that start in March and continue to blow till the onset of monsoons over northeast India. These cause large scale damage to life and property. Towards the end of the summer season, many parts of India experience pre-monsoon showers. Many parts of the country, when summer season ends, they experience pre-monsoon showers. प्री-मानसून की फुहारें पड़ने लगती हैं, मालूम हो जाता है कि मानसून अब आने वाला है जल्दी भविष्य में. In Kerala and Karnataka, these pre-monsoon showers are called mango showers as they help in the early ripening of mangoes. कर्नाटका और केरला में प्री मानसून की बारिश होती है, इसको मैंगो शावर्स भी कहते हैं. ये हेल्प करते हैं आम के फसल के जल्दी होने के लिए. एडवांसिंग मानसून, दिस सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर. ये जून में शुरू होता है और सितंबर तक रहता है. ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन, a low pressure area develops over northwest India. The southeast trade winds are attracted towards this region. These winds leaving from the Indian Ocean across the equator and pass over the Arabian Sea and Bay of Bengal. These winds blow as southwest monsoons or the summer monsoons. The bulk of rainfall in many parts of India is due to these winds. These blow in the months of June to September. The amount decreases from south to north and east to west. However, the Tamil Nadu coast remains dry at this time. No rain, nothing is there in Tamil Nadu these days. The direction of southwest monsoon winds is determined by the relief features of our country. The Indian Peninsula divides these winds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. In this way, we have seen the explanation up to here. Rest we shall discuss in the next video next time. Till then, engage yourself in your class, prepare in proper manner for the coming test and examination. Thank you.